बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we learn how to create a desktop navigation menu in an Oracle Apex 21.2 इंशाअल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से डेस्कटॉप नेविगेशन मेन्यू बनाया जाता है Oracle Apex 21.2 में इंशाअल्लाह। So now click on App Builder. App Builder पे क्लिक करेंगे after signing to the workspace पे साइन होने के बाद now come to application Apex 21.2 application Apex 21.2 पे आएंगे, click on shared components पे क्लिक करेंगे। Now explore navigation menu under navigation tab। नेविगेशन के टैब के अंदर नेविगेशन मेन्यू में जाएंगे। Now click on desktop navigation menu। नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। Now hit create entry बटन। अब create entry के बटन को दबाएंगे। Now we do not select parentless entry. Now we do not select anything from parentless entry drop down। हम parentless entry drop down से कुछ भी मुंतखब नहीं करेंगे। Now I will change the sequence. You can leave it as it is। मैं सीक्वेंस जो है वो चेंज कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। Specify less entry label बता दें which will be setup forms, जो कि हमारे setup forms होंगे। Now select page in this application from target type drop down। Select page number। पेज नंबर बता दीजिए। Now define image / class as well। You can choose it from your choice, any image which you like, and we can change it as well। आप कोई भी तस्वीर जो आपको समझ में आती है वो आप मुंतखब कर सकते हैं और वो चेंज भी हो सकती है।
Now hit create list entry button. क्रिएट लेस एंट्री बटन को दबा दीजिए. Now we can sign in again. अब हम दोबारा इसको साइन इन करते हैं. So now the setup forms desktop navigation menu is available. Setup forms desktop navigation menu आ चुका है. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.